Recording stopped. So it's 8 o'clock. Hi, everyone. We're ready to begin the webinar that all of you had been waiting for. Learn to unlearn. So we have today we have a lot of things lined up for you, which will help you learn and grow while you move out of this life from 11th and 12th and move into the new genre, new beginnings, the dream world that is the college life. I think most of you सबने सुना होगा ये अपने parents से या अपने elder brother sister say that college life is the best thing that one can have. So today we are here to help you maximize that life. What is the best that you can do in this 4 years, 5 years of journey? How you can maximize it? What are the things that you can learn, and what are the things that you need to unlearn while you move into this new dream world? Right. So I have with me my co-host Deepak Goyal. He is a mentor at my classroom. He's an IIT Delhi comp science pass out himself. So he's here to share the been there, done that experience with us today. And again, our star of the show today would be Tarush Goyal. He is an IITian himself. He secured rank 16 in IIT JEE Advanced in 2018, and he's been working across the sectors. He's been gaining experiences in different internships with different brands in order to build his profile, and also has been a pioneer in launching a lot of things. He's currently working with Graviton, one of the most sought after IIT JEE placement organizations, and he's here to share his experience with us to guide all the students towards this journey, and how you can do that, how you can maximize it. And we have with us from the My Classroom team, Akshat Agarwal and Kranti Tej. They will be sharing they'll be sharing about their experience at My Classroom and what are the internship opportunities that we have at My Classroom. Once you move out of My Classroom, the journey never stops. It's not that the 2 years or the 4 years that you spend here will just end there. So we will be hand holding you. We will be staying connected with you. We want our students to come back to us and work with us. We are there to groom you, help you, and also nurture and imbibe you guys into the organization culture, the amazing organization culture that My Classroom has. Right. So let's begin. Is everybody excited? I want to see some hands raised there. If you guys are excited to start it. Oh, I can see a lot of raised hands there. So learning to unlearn. I think unlearning is the most important thing that one needs to learn in this life, be it our personal lives, or be it our professional lives, or be it anything. Because we get stuck on certain ideas and then we probably just are not ready to move out of it. So we'll just begin our session today with the first agenda for the day, that will be taken care by Mr. Deepak Goyal. That is what to expect from your college life. So over to Mr. Deepak Goyal. Hi, everyone. My agenda would not be to basically like bombard you with a lot of information और थोड़ा interactive रखेंगे और कोशिश रहेगी कि जो star of the show है तारुष, he should be able to give his best inputs क्योंकि हम लोग अब थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, चीजें काफी change हो चुकी हैं. They are the young brigade. They have been in the firing line recently and they can come out with some brilliant things. चक्कर सिर्फ ये हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि getting into college is just about like doing a degree, उतना ही रह जाता है. It's not like that. There's a lot of other stuff also. And majority of the students don't even know when they get into engineering colleges की life में करना क्या है. तो ये बहुत simple सा सही होता है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो engineer बन जाओ. And then you will be able to figure out that what you want to do. And you have heard so many different cases. There are people into Bollywood, there are people into sports, there are people into politics, all different ventures. People have started their own companies. So there's a lot of different variety which is there as far as college life is concerned. तो स्टार्टिंग में एक बार देखते हैं कि है क्या एक बेसिक सा
introduction. Just come to the first slide. ये तारुष का journey map था. We'll hear it from तारुष directly. Agenda के बाद हमारा जो अगला perspective होगा आज कि सबसे पहली चीज जो students नहीं realize करते that once you get into the college, on day one there are opportunities for scholarships. Like if I talk about IITs in general, so there's something called MCM scholarship where if you have certain economic concerns, you can apply for scholarships where your majority of the tuition fee will be waived off. तुम्हें hostel में काफी concession मिलता है. And then there are certain alumni also from college which keep on coming up with a lot of scholarships. Even companies also sponsor. So there's a lot of such things are there. So whenever you take admission in a college, always ask the administration, are there any opportunities? Are there any possibilities for scholarship or not? तो ये बहुत बड़ा अंडर एस्टिमेटेड सा एस्पेक्ट है जो बहुत बच्चे मिस कर देते हैं एंड विच कैन रियली हेल्प यू आउट अ लॉट. मैं लोन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूं. देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज व्हिच एग्जिस्ट व्हिच यू शुड बी एबल टू अवेल. दैट विल बी बेस्ड on your financial background also. That will be based on your academic performances also. There can be certain contests. There can be a lot of such opportunities. तो हाउ इंपॉर्टेंट इज द रोल्स ऑफ POR. अब जैसे आप एंटर करते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जाते ही सबसे पहले ऑलवेज हैव दिस इन माइंड दैट यू हैव टू चूज सर्टेन फील्ड्स ऑफ योर इंटरेस्ट. सर्टेन लोग सोचते हैं सर इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा क्या होगा, व्हाट इफ आई गेट बैक इनटू कल्चरल एक्टिविटीज, तो उससे फायदा क्या होगा. तारुष से सुनते हैं कि तारुष आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें. Did you take up any position of responsibility during your 4 years of journey? या तो मतलब POR भी ऐसे बहुत टाइप्स के होते हैं. मतलब आई एम ऑडिबल राइट? यस. हाँ, तो मतलब POR भी बहुत टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट. तो मुझे POR का फुल फॉर्म बता देता हूँ. इट्स पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. हाँ, तो सब में जो कॉमन होता है दैट इज ऑब्वियसली रिस्पांसिबिलिटी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें एक एस्पेक्ट होता है जो तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं. तो लॉट ऑफ पीपल हैव मतलब बहुत हॉस्टल से अटैचमेंट होती है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ PORs इन हॉस्टल. जैसे मेस सेक्रेटरी होता है, ओवरऑल सेक्रेटरी होता है हॉस्टल का, या इंडिविजुअल जैसे म्यूजिक का आप अपने हॉस्टल के इंचार्ज बन सकते हो, या स्पोर्ट्स के अपने हॉस्टल के इंचार्ज बन सकते हो. तो मोस्टली इफ let's say you're good at sports and you are attached to your hostel, then you can choose to be a sports hostel secretary. And ऐसे करके हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है. But all of these positions, they are going to demand a significant time of yours in the semester. तो ये चीजें आपको पहले से ध्यान देनी होती है. मोस्टली फर्स्ट ईयर डजंट हैव एनी हेवी PORs. फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट होता है कि जिन सीनियर्स ने वो करंटली PORs लिए हुए हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करो. यू टॉक की कितना लोड है और आपकी दूसरी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, उनके बेसिस पे वेदर दैट POR इज गुड फॉर यू और नॉट. और इफ यू अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये दिस POR इज समथिंग आई वुड लाइक टू टेक अप, देन यू आल्सो, तो तुम्हें उनसे पूछना है कि व्हाट शुड आई स्टार्ट डूइंग. क्योंकि दैट POR का काफी पहले से स्टार्ट करना पड़ता है. यू हैव टू बिल्ड अ प्रोफाइल फॉर अ POR. तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ, मतलब इंस्टीट्यूट लेवल पे भी PORs होते हैं जो हाईएस्ट लेवल के PORs होते हैं. मतलब जैसे पूरी इंस्टीट्यूट की भी काउंसिल होती है. आई थिंक हर कॉलेज में अलग सिस्टम होता होगा, बट रफली ये होता है कि हॉस्टल की काउंसिल होती है, हर हॉस्टल की, और फिर इंस्टीट्यूट की. जैसे स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वैसे ही कॉलेज में होता है सेम चीज. और ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट लेवल पे जो होता है दैट हैज मोर वैल्यू, यू नो, व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ प्रोफाइल. एंड देन देयर इज फिर प्लेसमेंट सेल होती है, उसमें भी बहुत वैल्यूएबल PORs होते हैं. प्लेसमेंट मैनेजर्स, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर्स वगैरह वगैरह. हर कॉलेज में हल्का हल्का डिफरेंस होता है. एंड देन देयर आर एकेडमिक PORs आल्सो. जैसे तुम कोर्सेज में TA बन सकते हो, टीचिंग असिस्टेंट्स. यू कैन टेक अप समर्स में तुम मेंटर्स बन सकते हो. देयर आर सम प्रोग्राम्स, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, रोबोटिक्स वगैरह, तो उसमें तुम इंचार्ज बन सकते हो. या छोटे छोटे टेक लेवल के या अकेड लेवल के PORs होते हैं. तो मोस्टली आई वाज देयर इन, मतलब मैं मोस्टली समर में ही प्रेफर करता था POR लेना, नॉट ड्यूरिंग द सेमेस्टर, बिकॉज आई वाज मोर टुवर्ड्स कि मुझे थोड़ा सा रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा लगता था. मतलब वो आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज पे है. तो मैं समर्स में मोस्टली मतलब सो वी यूज्ड टू हैव दिस समर ऑफ साइंस एंड समर ऑफ कोड, जिसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग और प्रोजेक्ट्स बनाते हो तुम कोडिंग यूज करके. तो आई यूज्ड टू गाइड स्टूडेंट्स अबाउट देम. तो समर्स और विंटर्स में मोस्टली मैं करता था.
बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है कि POR करना है। तो द चीफ थिंग इज कि मतलब वही कि यू हैव टू बी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, क्योंकि यू वुड बी इन चार्ज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोग डिपेंड करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो हाँ, रफली आई थिंक यही है। बट अगेन ये नहीं होता, जैसे ये नहीं होना चाहिए कि तुम सेकंड ईयर में जाके तुम्हें दिमाग में आए कि ओ मुझे तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनना है, कि इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि अगर तुम्हें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सेकंड ईयर में बनना है तो उसके लिए तुम्हें एक प्रोफाइल फर्स्ट ईयर से बनानी पड़ेगी। तो सेकंड ईयर में जो भी PORs होते हैं, तुम्हें वो फर्स्ट ईयर में जाते ही यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देम। फर्स्ट ईयर में तुम्हारी एक मिनिमम प्रोफाइल होगी तो ही तुम सेकंड ईयर में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन सकोगे। और बच्चे इसके एडवांटेजेस ये हैं, अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डेवलप अ लीडरशिप स्किल which is very very important part of your college journey. Second of all, even if you look at your future journey जिसमें placements आ जाती हैं, जिसमें higher studies आ जाती हैं, तो उनमें भी इन चीजों की बहुत वैल्यू है। when because ultimately when you will be getting into jobs, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे leadership roles लेने पड़ते हैं। So if you have a history in that, if you have proven yourself at the college level, then when companies come for placements, they give a lot of weightage to all these things. एक बच्चा जिसने अपनी 4 साल की जर्नी को बड़े अच्छे से मैनेज किया है, has been part of lot of different activities, has displayed the leadership skills at different levels in the college, definitely they have a preference, because कहीं ना कहीं वो एक comprehensive package की तरह बच्चा सामने आता है। And when you're going for higher studies, जैसे CAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, MBA के लिए जा रहे हो, वहां पे भी इन चीजों का बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। एंड इवन व्हेन यू विल बी अपीयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज, तो एक इंटरव्यूअर के ऊपर एक इंप्रेशन होता है कि हाँ, दिस गाय ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर टू अस। तो अगर हम इस बंदे को अपनी टीम में लेके आते हैं, तो he or she knows about the team play, about different aspects also. तो ये भी एक बहुत बड़ा important point. Everybody's looking for all-rounders these days. Nobody wants an acad person, because it's not only about the work that you're doing at an organization. इसमें बहुत कुछ है, team management है, you're interacting with a lot of people out there. So वो people skill, and that comes from when you've managed a lot of things, when you've worked across domains. And I think college life एक best time है to acquire that skill. And Exactly. when we have been doing hirings, we look at people, who have PORs in their, I think all सब companies, तो किसी के पास CV scanning का time नहीं होता, so they always say, मुझे याद है MDI में भी, they always say, सबसे पहले जो first round होता है उसमें सबसे पहले कहते हैं आप सारे सेकीज के CVs दे दो हमें बस, all the club sekies, just their CVs should be floated to us. Many companies, they ask for that, because so end of the day, बच्चे, it's important कि you have a life beyond academics, you have a life. So if you're hiring somebody who doesn't have a life, तो वो बहुत बड़ी problem है सबके लिए, because that person will be a pain for everyone involved. So you need people who have a life, people who gel with others, those who know how to basically be a part of a team. So it is very important. और ये skill आप बहुत brilliantly सीख सकते हो during your 4 years of journey. But as Tarush pointed out, you have to start in time and need to plan it brilliantly. You have to do your homework right, basically what Tarush also pointed, that what is your interest, where do you see yourself, where your alignment is. ऐसा नहीं कि चलो सब में घुस जाओ, ठीक है, कहीं तो fit हो जाएंगे, then it won't work. It has to be a focused effort towards one club or one activity that you want to be part of. The next is the different project options that you have. There are a lot of opportunities from students' perspective. In-house hai, in-house matlab college mein, your seniors are there. You can be a part of a lot of startups. Outside hai, again, we'll like to hear this from Tarush itself, because he's the younger brigade who knows the best scenario in today's world. Tarush, you're on mute, I think. हाँ, सो प्रोजेक्ट में भी लाइक बहुत ज्यादा ऑप्शन है, जैसे दीपक सर बोल रहे हैं। तो मतलब स्टार्टिंग विद कॉलेज लेवल, तो एल्यूमिनाई, मोस्ट कॉलेजेस हैव एन एल्यूमिनाई ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से प्रोजेक्ट्स देते हैं हर समर या ड्यूरिंग सेमेस्टर ऑल्सो। और उसमें सब वेराइटी होती है, लेकिन नॉन एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स विच विल हेल्प ऑर्गेनाइज सम ऑफ द, कोई ना कोई एल्यूमिनाई तो होते हैं जो स्टार्टअप कर रहे होते हैं। तो मोस्टली देयर आर अपॉर्चुनिटी, जैसे तुम उनको जाकर हेल्प कर सकते हो इन मैनेजिंग देयर स्टार्टअप और बिल्डिंग द टेक फॉर देयर स्टार्टअप। मतलब दोनों, बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। फिर कॉलेज के अंदर भी होता है, लाइक कॉलेज का तुम्हारा टेक होगा, जैसे हमारा इंस्टे ऐप था या कुछ वेबसाइट्स थी, so they used to take people, matlab, so those projects were open for people to take on and add some features, or if you want to manage some event held by the placement cell, so these kind of projects are always there इंस्टीट्यूट लेवल पे और एलुमनाई लेवल पे भी। और बाहर से करना है तो
मतलब that would require some extra effort or a recommendation. So that is जैसे दीपक सर बोल रहे हैं वही है कि you can either go for startups or big firms, but मतलब earlier years में like people prefer startups because एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता है. यू गेट टू नो कि जो तुम सीख रहे हो या जो तुम सीखोगे वो एक्चुअली यूज कैसे होने वाला है रियल वर्ल्ड में. यू गेट टू बिल्ड थिंग्स फ्रॉम स्टार्ट. तो हाँ, so all of these kinds of projects are available. We have a section here from my classroom team also, जो हम end में आके बताएंगे, because there are infinite opportunities for you all. As Siva ma'am mentioned at the beginning only, तुम्हारी journey हमारे साथ शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है. So we want to catch hold of you people for much longer period of time, and we'll be sharing lot of amazing opportunities that we have for you. The next point is how important is the role of GPA. GPA बच्चों एक तरह से आप कह सकते हो कि और performance, academic performance है during your 4 years at college. Ultimately पढ़ने ही जा रहे हो, so you have to imagine yourself being good students. The number that I think everybody was sharing it from Chatur to Rancho to everyone. So that is the 5 point someone, the famous book about IITs and all these things. So definitely life is fun in college, but not at the cost of academics. So Tarush being a topper would be able to tell better. मैं तो खुद अपने time पे थोड़ा mixed bag of things ही था. So I think he'll be able to tell a lot better. So what is the role of GPA in placements? प्लेसमेंट्स में मतलब बताता हूँ मैं, बट इन जनरल आई थिंक लॉन्ग टर्म में जितना मैंने सीनियर से पूछा, जैसे सर दीपक सर, ऐसे आपसे पूछता हूँ, या ये जैसे भवेश आया था हमारे कॉन्वोकेशन में, तो आई थिंक कोई भी जो पास्ट एलिमिनाई होते हैं ना, जो काफी साल एलिमिनाई होते हैं, दे ऑल से कि लॉन्ग टर्म में देयर इज नेग्लिजिबल वैल्यू एसोसिएटेड विद योर जीपीए. भावेश पता है ऐसा क्यों बोल रहा है? उसकी खुद की 7.2 थी, मेरी 7 समथिंग थी, तो इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं. बट आई डोंट थिंक सो ऐसा है. यू कैन गिव अ बेटर पर्सपेक्टिव. यू वर हाई 9 पॉइंटर्स, तो आप बता सकते हो. सर मतलब वही चीज है कि इमीडिएट प्लेसमेंट्स में इट डज हेल्प ऑब्वियसली. मतलब इफ यू लास्ट का थर्ड ईयर सीनियर ना बीटेक का, तो हील से कि जीपीए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीपीए है. क्योंकि थर्ड ईयर में क्या होता है, आपकी इंटर्नशिप्स लग रही होती है पहली बार, मतलब प्लेसमेंट लेवल की इंटर्नशिप्स लग रही होती हैं. और तब थर्ड ईयर में आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती है. मतलब आप मान लो 2 ही साल का बीटेक किया है आपने, उनमें से एक साल तो कुछ सिखाते भी नहीं है. तो नॉलेज इतनी कम होती है कि कंपनीज जीपीए को एक मेजर फैक्टर रखती हैं थर्ड ईयर में. थर्ड ईयर के सीनियर से पूछोगे तो हील से कि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब फर्स्ट ईयर के बंदे को बोल रहे होंगे कि प्लेसमेंट जीपीए ही करो. सेकंड ईयर में अगर जिन लोगों की इंटर्न लगती है, दैट इज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ जीपीए. सेकंड एंड थर्ड ईयर सीनियर्स आर यूजुअली से कि जीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट फोर्थ ईयर या जिसकी जो फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब में है, दिल से कि प्लेसमेंट जिसकी लग गई है फोर्थ ईयर के बाद, हील से कि नहीं, जीपीए का ज्यादा रोल नहीं था. इट वाज जस्ट वन ऑफ 10 फैक्टर्स. बाकी 9 पे काम करना इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक वही जितना लॉन्ग रन लेते हो तो जीपीए की वैल्यू कम होती है. बट इट्स नॉट लाइक, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेड्स छोड़ दो. नाउ जीपीए rather than being an absolute मतलब एक एब्सोल्यूट मैट्रिक ऑफ हाउ हु यू आर, जीपीए rather signifies कि तुम्हें जो असाइंड काम है तुम वो कितना अच्छे से करते हो. तो दैट इज हाउ अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कंपनीज लुक एट जीपीए कि बहुत ज्यादा जीपीए है, इट मींस कि तुम्हें कुछ भी काम दोगे तो तुम उसको पक्का अपने असाइंड वर्क को तुम बहुत अच्छे से करने वाले हो. बट लो जीपीए डजंट सिग्निफाई कि तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो. बच्चों एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. जैसे तुम अच्छे कॉलेजेस में क्यों आना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि अच्छा कॉलेज में जाओगे तो कहीं ना कहीं लाइफ गेट्स सॉर्टेड. देयर इज ऑलवेज अ possibility of more opportunities. Same is the case with companies also. When they're hiring people, they're betting on people. So they don't know कि कौन सा घोड़ा काम आएगा, कौन सा नहीं आएगा. तो when such a parameter is there for them, academics definitely defines that somebody who was, because primarily तुम कॉलेज में पढ़ने गए हो, बाकी सब add on है. No doubt they are very important, sometimes even more important, like way Tarush said. But अगर तुम अपने कोर काम पे ही बहुत pathetically fail हो चुके हो, then certain times companies have a doubt कि whether we hired this person, we engaged this person, whether he or she will be able to deliver it or not. So that is why it becomes important. It's a very important parameter. So ऐसा कर सकते हो that you keep a balance. You don't need to be very high in GPA if it is compromising on your other aspects, but you cannot ignore it also. So again, you can have more interactions on this with your seniors also. Can even send your queries to us also. We can have separate sessions on this also.
where how to basically balance out things would be important. Not out and out ignoring it, but maybe just to strike a better balance in it. I think that that was the first agenda of what to expect from college. And now we move into the second part. So सबसे important the importance of खेलना hobby. बहुत जरूरी है. पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, हाँ. खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब. ये भी बहुत important part है. Hobbies, I think, which is very underestimated, and you people have good couple of months before you settle down into your colleges. बहुत अच्छा time है where you have to explore yourself in terms of hobbies. मतलब मैं बहुत limited सा hobby experience था. I think Siva ma'am can tell better because she was into so many things. And then get Tarush's opinion also on this. Right. So I think hobby, everybody, even I think 11, 12 में when we counsel students, many of you would have interacted with your mentors. और बहुत सबने बोला होगा कि एक दिन अपने हफ्ते में जरूर, keep 1 hour for your hobby. I was interacting with our topper of NEET, he's scoring, I think 705 scores. So he was like, he was interacting with students. He was like, after every test, I love watching movies. So on Netflix, I used to spend 4 hours after every test. Like, after 10 days or 1 week, I used to watch a movie for 4 hours, watch a series for 4 hours on Netflix to, regenerate myself, to get back that energy, to get back, nahi to mera threshold aa jata tha. So that is very important, to maintaining a hobby. So that was for 11, 12. But when once you're into college again, and, even before that, honing your skills, something that is very close to you. आई थिंक जो चीज में करने में मजा आता है, तो अगर वो चीज आप कर रहे हो, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट एवरी डे यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ आवर्स, लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट ऑन दैट, बट few hours in a week, probably, howsoever you can manage, it will always keep you going. और बच्चे स्टार बनना बहुत आसान है. रीजन पता है क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इफ यू आर गुड एट समथिंग you will have minimalistic competition in college. Yes. ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस में बच्चे अच्छे नहीं होते. मैं जस्ट कहता रहा हूँ. तो जो तारुष ने बोला था POR, वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा हो जाता है. इफ यू परस्यू योर हॉबी, इफ यू गुड एट डिबेटिंग, इफ यू गुड एट पेंटिंग, इफ यू गुड एट क्रिकेट, मे बी अदर स्पोर्ट्स, you can easily excel in those areas during college because you will basically be able to explore that well. Yes. So I think तारुष से सुनते हैं. तारुष, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? सर मतलब मैं अभी वही बता देता हूँ कि बहुत लोगों की हॉबी किल हो जाती है, मतलब +1 +2 में, या फॉलो नहीं कर पाते हो, तो कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू रिज्यूम योर हॉबी और लाइक डेवलप न्यू हॉबीज. दोनों चीजें हैं. तो मेरी भी कोई ऐसे फिक्स्ड हॉबी नहीं रही. लाइक आई हैव चेंज्ड माय हॉबीज ओवर 4 years अ लॉट. मतलब मैंने बहुत कुछ पकड़ के बहुत कुछ छोड़ा है, और बहुत चीज़ों से स्टिक भी किया है. लाइक आई डिडंट नो हाउ टू प्ले बैडमिंटन, तो नाउ आई कैन से आई एम प्रीटी गुड एट बैडमिंटन. तो दैट इज समथिंग कॉलेज ने मुझे सिखाया है. हम पूरी रात बैडमिंटन खेलते थे बिकॉज द कोर्ट्स वर ओपन. तो से 11 से 4 तक खेलते थे रात को. एंड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स जो मैंने कभी नहीं खेली थी. मैंने स्क्वैश कभी नहीं खेला था, और ये सब चीज़ें लाइक कॉलेज ने मेरे को काफ़ी सिखाई हैं. बिकॉज you'll see कि कॉलेज में स्पोर्ट्स में कभी कमी नहीं होती है. आई थिंक इन मोस्ट कॉलेजेस लाइक ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हें खेलना है, तुम्हें जगह नहीं मिल रही है या वो है. मतलब इफ यू वांट टू प्ले समथिंग यू विल ऑलवेज फाइंड टाइम एंड स्पेस फॉर इट. स्पोर्ट्स वाइज मैं इतना बता सकता हूँ. इवन कल्चरल, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक, मैं कल्चरल्स में उतना नहीं था, मतलब डांसिंग सिंगिंग और ये सब. बट आई हैवंट मेट वन पर्सन जिसने बोला हो कि उसको कोई चीज करनी थी बट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. और ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर तक थी, थर्ड ईयर तक थी, आखिरी दिन तक तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कॉलेज में. कॉलेज चला के बोलेगा हॉबीज पिकअप करो, हॉबीज स्टार्ट करो. इट्स ऑन यू. मतलब अगर तुम्हें कल्चरल का शौक है, एक्टिंग करने का शौक है, हिम्मत नहीं आ रही, तुम पेड तो पक्का बन जाओगे किसी ना किसी प्ले में. तो मतलब उसकी टेंशन मत लो. बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है. मतलब लोग नहीं इकट्ठे होते, इतना कुछ होता है करने को हर दिन. नोटिस बोर्ड्स, योर इंटरनल ईमेल्स आर फ्लडेड विद अपॉर्चुनिटी. In fact, we've had, I think, so many. If you look at Bollywood or television industry, there are so many engineers out there. अरे जो चोरे करके मूवी आई थी, and even IITians who have diverted their path after IIT. Also, they've taken up acting because somewhere down the line they had a passion for it. And they, or most of the colleges have amazing fests. Yeah. Cultural fest, technical fest. There's so many opportunities. मतलब पानी की तरफ पैसा बहाते हैं और बड़ा कुछ होता है उसमें.
and the best thing is that कोई जज नहीं करता क्योंकि सब लोग उसी हाँ. एज ग्रुप में होते हैं, सब लोग उसी वाइब में होते हैं, कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला. इवन इफ यू आर बैड एट समथिंग एंड यू वांट टू स्टार्ट इट, देयर इज नो वन इज गोइंग टू जज यू. तुम्हें रैकेट पकड़ना नहीं आता, तुम पहले दिन बैडमिंटन खेलने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. पीपल विल टीच यू एंड यू विल एंजॉय. मतलब हर रोज यू जस्ट हैव टू मेक द एफर्ट. मतलब पूरी चीज उसी पे है. अभी 2 महीने फ्री हो, Exactly. कुछ कर लो, सीख जाओ. नहीं पहले तो सीखा हो, उसे रिवाइव कर लो, वो भी बहुत बढ़िया होगा. Very important. Very, and I think it will also, अगर इस टाइम पे भी आप कुछ you can get involved in certain clubs. I think local level पे clubs होते हैं whichever city you are in. So there are international clubs that you can be part of. Public speaking अगर किसी को interest है तो you can join Toastmasters. Then there are at this level that work, and अगर आप उसमें कुछ भी थोड़ा भी level achieve करते हो तो it really works wonders for your resumes going forward, and you can always overall continue. Personality also. Overall, yes, exactly. Speaking, I think, is one thing that will never go away, or that is needed in all walks of life. और देखो बच्चा, मैं एक इंट्रोवर्ट था, लगता नहीं है किसी को आज की डेट में, क्योंकि मैं चुप ही नहीं होता. कितनी मीटिंग बंद करनी पड़ती है लोगों को, मैं चुप नहीं हो रहा होता. और ओनली बिकॉज ऑफ कॉलेज आई पिक्ड अप. और फिर ऐसा पिकअप हुआ कि वो कभी बंद ही नहीं हुआ. And you need to, I think, आपने बहुत सारे motivational videos देखी होंगी, all the best leaders, they were the best public speakers. अगर आप, if you are a good speaker, then you can convince your audience, everything. So, and it is true. ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशन के लिए बाबा जी ने बना दी है. It is very true, and everywhere you will see, even companies, organizations, they give a lot of value to all these people, और जिन्होंने पहले कुछ करा हुआ है इन सब चीजों में. So this is still, you have time, 2 months, just start building on something. I know 2 months में तुम कहीं पहुंच नहीं जाओगे, but at least take that one step. Exactly. So that once you move into the college, you can continue it, because आजकल all good colleges, they have clubs, international clubs that you can be a part of. अगर आप अभी भी शुरू करते हो, आप you can continue after your college as well in your college, so that will help. Because देखो 12th क्लास तक, जैसे for if I give my example, मैं तो स्टेज की शक्ल नहीं देखी थी. पहली बार लाइफ में कुछ क्विज में, कोई कॉन्टेस्ट में कुछ आया था, और मैं जोश में ऐसे स्टेज पे गया था, 3-4 गमले उड़ा दिए थे स्कूल वालों के, तो उन्होंने बैन ही कर दिया था मुझे. एंड उसके बाद जाके कॉलेज गेव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कि मतलब वहां लोग कम जजमेंटल होते हैं. तारुष रेज द वेरी गुड पॉइंट. Yes, because you'll be judged for you already, you're already stars, you've cracked one of the the most toughest exams, and you've reached there, so nobody will judge you for not being a good dancer or not being a good actor. So you have great opportunity to learn there. तो उसको बिल्कुल जाने मत दो. Something that can always help you in the longer run. For importance of honing hobbies for foreign admissions, very important. I think आजकल many people, they eye foreign education, they want to go abroad after their graduation. Even exchange programs हैं. Even exchange programs, yes, definitely. थोड़ा सा exchange program तारुष explain करोगे यार? Exchange program में ऐसे होता है कि every college, मतलब हर college का एक specific set of culture बन जाता है. मतलब जैसे IITs का example है. IITs में तुम देखोगे ऑलमोस्ट हर स्टेट से ही मतलब बच्चे आते हैं. IITs रिप्रेजेंट इंडिया का पूरा कल्चर, बट बाहर का कल्चर नहीं है, इंडिया का ही कल्चर है. सिमिलरली अगर तुम मे बी NUS देखोगे, सिंगापुर में है, टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में है वो वर्ल्ड की, तो उनका भी एक बहुत अच्छा कल्चर है. पूरा सिंगापुर का कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स. वहाँ पे चाइना और इंडिया से भी कुछ हैं, बट स्टिल वहाँ का एक एक्सपीरियंस अलग होता है. तो यू कांट कंपेयर एक यहाँ का कल्चरल एक्सपीरियंस वहाँ के कल्चरल एक्सपीरियंस से. तो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम रखते हैं जिसमें लाइक दे सेंड सम स्टूडेंट्स देयर एंड दे सेंड सम स्टूडेंट्स हियर, और कोर्सेज वगैरह का कुछ हो जाता है जुगाड़. मतलब जो वहाँ होने होते हैं वो यहाँ हो जाते हैं समहाउ करके. अकेडमिक्स का मतलब उतना कुछ वो नहीं होती पेन. बेसिकली लाइक द students there, they get to experience कि यहाँ पे कैसा सिस्टम है, what kind of culture people follow here, what kind of मतलब घूम भी लेते हैं, और कॉलेज वाइज भी कैसा प्रोसेस है, और यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ का कर लेते हैं. ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से मतलब कनेक्शन होता है IITs का. इवन नॉन IITs का भी होता है, मतलब मेजोरिटी कॉलेजेस का होता है कुछ कनेक्शन. एंड इवन इफ यू गेट टू सम अदर कॉलेज इन इंडिया, इवन दैट यू विल सी कि उसमें भी बहुत अलग सिस्टम है. हर 2 कॉलेजेस इंडिया में अलग हैं. मतलब इवन IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे वुड आर वेरी डिफरेंट, मतलब कल्चर वाइज. तो इवन इफ यू गेट मतलब अगर एक महीने के लिए अगर तुम IIT दिल्ली जाओगे इंस्टेड ऑफ IIT फ्रॉम IIT बॉम्बे, तो यू विल सी कि बहुत डिफरेंसेस हैं, द वे थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, द वे पीपल बिहेव. तो लिंगो में बहुत फर्क है, लैंग्वेज ही बहुत डिफरेंट हो जाती है वहाँ पे. मतलब जैसे बॉम्बे वाले हर चीज में पेन पेन बोलते हैं, हम लोग फाइट फाइट बोलते हैं.
तो आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते कहानी चल क्या रही है। तो तारिश इज फ्रॉम IIT बॉम्बे। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ही इज कंप्यूटर साइंस पास आउट फ्रॉम IIT बॉम्बे 2022 बैच ओनली, इसी साल पास आउट हुए। तो somebody was asking his salary also, sorry we can't disclose that, वो डिस्क्लेमर है। तो आगे नेक्स्ट would be like how to handle stress in college, again a very important point. Stress, I think, at all levels, I think everywhere. इसका तारुष ज्यादा Students- बता सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वैसे ही बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। सो देखो स्ट्रेस तो होगा ही, आई थिंक किसी ना किसी पॉइंट पे तो होगा स्ट्रेस। तो मैं ऐसे थोड़ा रिग्रेट भी और होगा कि शायद मे बी दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग। ऐसा पॉइंट हर एक ज्यादातर लोगों के लाइफ में आता है, कॉलेज में एक दो बार तो आता है। तो आई थिंक इट्स गुड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, और एंड मतलब ये सोचना होता है कि वाई ये स्ट्रेस मुझे क्यों आ रहा है, कि इज दिस रियली माई प्रायोरिटी। इफ यू आर हैविंग, अगर तुम्हें इसलिए स्ट्रेस हो रही होगी कल एग्जाम है और तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर ना, कि भाई यहाँ पे 10 मार्क्स कम भी आ जाएंगे तो इट डजंट अफेक्ट द बिगर पिक्चर मच। मतलब आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट द बिगर पिक्चर जब भी मुझे स्ट्रेस हुआ है। एंड बाकी डायरेक्ट एकेडमिक स्ट्रेस होता है, लाइक मैं अपने स्ट्रेसेस का एग्जांपल ले लेता हूँ जो मुझे कॉलेज में हुए हैं। एकेडमिक स्ट्रेसेस में बता देता हूँ कि एक तो एग्जाम का होता है, बहुत बार होने वाला है इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत कॉमन है कि एग्जाम कल सुबह और तुम्हें आज याद आया, या तुम्हें आज तुमने सिलेबस देखा और आज स्टार्ट किया और तुम्हें रियलाइज हुआ कि जितने घंटे के लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, उतने उससे आधे ही घंटे बचे हैं एक्चुअली एग्जाम में। तो यू हैव टू, तुम्हें कैलकुलेट करना होता है 1 घंटा लगा के कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है पहले। तो इस तरह के मोमेंट्स आएंगे जब बहुत स्ट्रेस होगा, या तुम्हें रियलाइज होगा तुमने मिस कैलकुलेशन कर लिया कुछ प्रिपेयर करने में, या मान लो तुम्हें POR में भी बहुत स्ट्रेस आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर हो, जैसे मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर्स रह चुके हैं, तो मैंने देखा है उनको काफी स्ट्रेस होता है कि internship coordinator, तो you have to bring companies for internship, so they also have targets कि at least 75 बच्चे day 1 पे internship लगनी चाहिए। if you are not able to meet those criteria तो तुम्हारे ऊपर placement cell से काफी pressure आता है। तो इसे responsibility wise भी you can get a lot of बहुत तरह के stress आ सकते हैं, but always look at the bigger picture कि मैंने क्या accomplish किया है, और like take things as a challenge। जैसे मैं एग्जांपल तो मैं बहुत बार चैलेंज की तरह लेता था कि भाई 6 घंटे बचे एग्जाम में, ये 18 घंटे के लेक्चर्स हैं, तो लेट्स सी मैं हाउ मच कैन आई मेक आउट ऑफ इट इन 6 आवर्स। इट्स अ पर्सनल चैलेंज, और व्हाटएवर फिर उसके बाद कुछ भी मार्क्स आए तो दैट इज माय अकॉम्प्लिशमेंट। तो इफ यू टेक थिंग्स एज चैलेंज एंड लुक एट व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस, तो मतलब रिग्रेट रखने की जगह ऐसे सोचो कि तुमने उसको एक डिफरेंट चैलेंज में कन्वर्ट करा है एंड यू आर लर्निंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट। तो आई थिंक स्ट्रेस मैनेज हो जाता है काफी इजीली। बाकी सेकंड चीज होती है कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक मेरा रूममेट और मेरा विंग इसके लिए बहुत वो है, मतलब somebody स्ट्रेस दे बट चल चाय पी के आते हैं, चल बिस्किट खा के आते हैं, कुछ भी आइसक्रीम खा के आते हैं, कैंटीन नीचे वहां घूम कर आते हैं, 10 मिनट्स की बात होती है पर वो 10 मिनट में इतनी अच्छी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है, मतलब सब लोग स्ट्रेस्ड होते हैं या सबकी फटी होती है। तो आई थिंक वो फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेस में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तारुष ने कहा है, बिकॉज whenever you are in college, you have any concerns, always try to reach out to your friends, family, mentors. My classroom में तुम्हारे इतने सारे mentors हैं, be open about it. कहीं कोई भी स्ट्रेस आता है, कुछ भी आता है, बिकॉज जर्नी इजी नहीं होती कॉलेज में। देयर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आल्सो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों में। तो ओपन अप होना बहुत जरूरी है, आराम से खुल के अपने स्ट्रेस को डिस्कस करो। कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात नहीं है, नहीं डिस्कस कर रहे हो वो एम्बैरेसमेंट है, डिस्कस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को समझ के उसके से सामने रखना बहुत बड़ी करेज वाली बात होती है। यू शुड नेवर एवर होल्ड बैक, मतलब हमेशा बोलो, जहां कंसर्न आया, जो चीज तंग कर रही है, स्पीक आउट। और कोशिश करो, हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल। उसमें नहीं सॉल्व हो रहा, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर मेंटोर्स, बट स्पीक आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। The college is just a stepping stone to the life. So it will be like you can say that it's a trailer to the life. So in these 4 years, you can learn and hone everything that the life will throw on you once you move out of college life. तो वो सब चीजें आपको पहले ही दिखाई जाती हैं, everything, because you have to manage so many things. Your own on your the people who are staying in hostels, definitely, and they have to manage everything on their own.
they're away from their parents for the first time. Now you have to manage your acads, you have to manage your personal life, you have to manage your friends, your family. In fact, your other things, extracurricular activities. Then so the stress aega definitely. So I think very important point here that Tarush has mentioned, that speaking with your friends, engaging with your friends, having a friend circle is very important, and not only for college life but for the life ahead as well. Very important. So let's move on to the next part now. Once we've covered the importance of hobby, now third part is how to stand out during your college journey. Standing out doesn't mean standing out of the college. Standing out of the class, क्लास के बाहर खड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम. Standing out means that how you can. Because majority बच्चे वही करते हैं, कॉलेज में बंक मारा, कॉलेज के बाहर खड़े हैं. ये तो बताया था पीपीटी में, यही करना है हमने. You have to stand out. No, standing out doesn't mean that. That's a disclaimer here. So basically, how you can build your profile and how you can make your CV, one that is sought after for, that all the organizations look for, and otherwise also, how can you build a profile that is standing out from the rest. So, first point here is importance of inter and intra college competitions. Tarush, you would have been part of a lot of competitions. So what do you think? How important are these competitions? कोडिंग के बारे में बताना यार. I think बहुत कम लोगों को पता होता है. हाँ सर, कोडिंग में तो मतलब ऐसे कि इंटर कॉलेज इंट्रा दोनों ही कोई कमी नहीं होने वाली. मतलब आप इंटर कॉलेज तो मतलब गूगल करोगे तो हर दिन ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जिसमें आप एक्चुअली मतलब अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट, मतलब आप हर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज में से आपको टीम बनानी होती है 3-4 लोगों की, और आपके कॉलेज के नाम से आप आते हो. तो कोडिंग में तो आई कैन से कि बहुत ज्यादा इनफिनिट कॉम्पिटिशंस हैं और बहुत वैल्यूएबल कॉम्पिटिशंस होते हैं. मतलब इफ यू डू वेल इन, इवन इफ इन सर्टेन कॉम्पिटिशंस, तो गूगल से तुम्हारे डायरेक्टली ऑफर्स आ जाते हैं, या और टॉप टेक कंपनी से ऑफर्स आ जाते हैं. और बच्चे तो इसमें सबसे अच्छी चीज ये भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तो आईआईटीज बहुत पीछे चल रही होती हैं इनमें. नॉन आईआईटी कॉलेजेस ज्यादा बेटर कर रहे होते हैं. वो चीज काफी कॉमन है इंटर कॉलेज में. हाँ जी. और इंट्रा कॉलेज में आई थिंक इंटर कॉलेज में तो ये मोस्टली यार इट्स अबाउट फन एंड रियलाइजिंग कि तुम अपने कॉलेज में कहाँ स्टैंड कर रहे हो. कि भाई ये बंदा जो हमेशा रूम में बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, पता चलता है कि वो तो पूरा टाइम कोडिंग कर रहा है, कि उसने इंटर कॉलेज फोड़ दिया. मतलब इट्स अबाउट नोइंग पीपल हु स्टैंड्स वेयर एंड स्टफ. तो इंटर कॉलेज इज मोर अबाउट फन, बट इसमें भी आई थिंक इंटर कॉलेज या इंटर कॉलेज में भी फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टीम को लेके बढ़ रहे हो. मतलब इफ यू आर, तो इसमें मैंने एक चीज देखी है कि मतलब यू शुड हैव एटलीस्ट 1 or 2 फ्रेंड्स अराउंड वेयर यू लिव. मतलब अगर ये अगर है कि ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि अगर लेट्स से कि मैं एक जगह पे एक हॉस्टल में रहता हूँ एंड आई से कि ऑल ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स आर इन सम हॉस्टल 5 और मैं हॉस्टल 3 में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्टल 3 में भी आई शुड हैव सम क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज तुम कोई स्ट्रेस हो या कोई कंपटीशन हो ना, तो साथ में बैठना बहुत बड़ा फैक्टर रहता है. इवन इफ एग्जाम से एक रात पहले देख लो, रात को तुम साथ में रूम है, तो बहुत इजियर होता है प्रिपरेशन करना है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. मतलब ये एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स वगैरह की तो बहुत कंपटीशन होता है, उसमें तो बहुत देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ एंथुसियाज्म अबाउट हॉस्टल कंपटीशंस, बिकॉज पीपल सी, मतलब ऐसे ईगो से लेते हैं लोग अपने हॉस्टल को. तो तुमने शिशोरे मूवी देखी होगी, तो यू मस्ट हैव सीन दैट वाज एक्चुअली अ ट्रू पिक्चर ऑफ आवर कॉलेज. एग्जैक्टली अ ट्रू पिक्चर, आई मस्ट से. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रा कॉलेज के अंदर, इवन जो लोगों को गेमिंग का शौक है ना, you'll be surprised, गेमिंग के अराउंड बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं. Gaming is like a professional hobby in college. Like प्रोफेशनल हॉबी, एंड एक्चुअली इट्स अ प्रोफेशनल हॉबी. यू कैन कार्व आउट अ करियर आउट ऑफ इट आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली किसी को गेम बनानी है तो उसको चाहिए कि व्हाट इज द यूजर एक्सपीरियंस, कि उसे एक्सपीरियंस कैसे करना है. तो मतलब मैं ये जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मतलब कि गेमिंग शुरू कर देनी है, पर ये कह रहा हूँ कि इतनी वियर्ड हॉबीज भी ऐसी हैं जिनके अंदर इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं. तो अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है. Second is, I think we've already covered that also. The coding sole way to earn a decent I've career. quizzes on Harry Potter, Game of Thrones, तो मूवी या टीवी सीरीज फैन हो तो भी बहुत कुछ होता है कॉलेजेस में. Quizzes and all. And is coding the sole way to earn a decent career? I would say no, because consultancy है, फाइनेंस है, और बहुत सारी कोर जॉब्स हैं जिनमें इनफाइनाइट ग्रोथ है. इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज योर स्किल सेट.
There are people जो consultancies में गई हैं, जो business jobs होती हैं, और उसके बाद they have made brilliant careers out of it. मतलब I don't think so coding is the only sole career. You can do a lot of other things also. आप कल academics में आ सकते हो, मतलब आप कल खुद एक जेई कोच बन सकते हो, जेई नीट कोच बन सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा decent career है. So there are a lot of opportunities. Darush, if you would like to highlight from your personal experience कोई ऐसा तो मतलब करियर देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइक सीएस इज जस्ट वन ब्रांच ना, एंड देयर इज अ रीजन कि CS is not half the population of the college. It's just one branch. So I think ऐसा होता है कि CS में I think earlier packages थोड़े ज़्यादा होते हैं, like for the first few years. तो people tend to think कि this is like कि भाई in let's say बाकी departments में थोड़े कम packages हैं, CS में ज़्यादा है काफ़ी, तो this is a better career option. Yeah, this is more secure. But the truth is कि after 4 or 5 years, in the long run, like it's like all of them are equivalent. ऐसा very कुछ good. भी नहीं, जब डिपेंड्स ऑन तुमने कैसे अपना जर्नी किया है, rather than कि करियर कौन सा था. काफी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5-6 साल बाद ऑलमोस्ट सारे एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, मतलब कोई लंबा चौड़ा I think नहीं थोड़ा है. सा इंडिया में भी बायस है कि IT इज डूइंग बेटर. लाइक जितना मैंने इसे सुना है कि सिर्फ बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि कोडिंग में यू हैव अ हायर स्टार्टिंग पे और समथिंग. तो ये दिस इज जस्ट मतलब ये अर्लियर इयर्स में ऐसे बायस होता है थोड़ा सा लोगों में, बट मेरे फ्रेंड्स हैं जो कोर में गए हैं, मतलब बाकी डिपार्टमेंट्स की जॉब में गए हैं, दे आर सेइंग कि बहुत अच्छा करियर है, इट्स एज गुड एज कोडिंग. हो सकता है कि थोड़ा पैकेज कम हो स्टार्टिंग में, बट लाइक द करियर लैडर इज लाइक एज गुड एज एनी अदर जॉब. टोटली, मतलब बाद में जब तुम स्टार्टअप्स बनाओगे और स्टार्टअप मांग के बाद जब तुम पैसा मांगने जाओगे जिन वीसी से, मोस्टली वो नॉन कोडिंग वाले ही होते हैं. तो जब दो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ऐसा नहीं है कि मतलब कोडिंग वालों की वैल्यू है. मान लो तुमने कोडिंग की और स्टार्टअप बनाया और बाद में जब पैसे की टर्म आई तो तब तुम्हारे वो नॉन कोडिंग वाले फ्रेंड्स तुम्हें नजरें दिखा रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ वेरी वर्सेटाइल प्रोफाइल एज फार एज कॉलेज इज कंसर्न. You can explore a lot of things. Next is importance of hackathons and entrepreneur cell. I think all of the colleges they have these. वैसे entrepreneurship का मतलब है basically that how you can basically learn the business side of the things. कि अपना खुद का स्टार्टअप, खुद की कंपनी बनानी है, तो what are the aspects required in it? You'll be surprised to know that all the top colleges, even all the good colleges, जितने भी सारे हैं, mostly सब में ये सेल already होता है, जहाँ पे you can learn different skills of how to launch your own company. You can be part of lot of startups. You can start your own companies also. Again, तारुष, आपका कोई एक्सपीरियंस इसमें? नहीं सर, ई सेल का तो मैंने नहीं लिया था. मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जितना भी मेरे को नॉलेज है आपके थ्रू ही आया था मेरे को. तो Tarush was doing the live thing, so he worked on a couple of startups with us. So his entrepreneurship was cell was outside the college, but I think बाकियों के लिए I would say कि again a very important aspect, अगर किसी को अपना business बनाना है, करना है, तो day one से इसे please explore करिए. बहुत amazing opportunity. Very important. Learn all the other aspects, just not just the tech side, but business management, everything. So last point here is how to maintain the balance between academics. I think it's not only for college life, but 11th, 12th के students को भी ये बहुत रहता है stress. And we have had in Q&A, we've had questions from students that how to manage our studies and how to manage how to be active in extracurricular activities during 11th, 12th as well. So how to maintain a balance between academics and other activities? Tarush, how are you doing it? मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी ओपन सा क्वेश्चन. मतलब तो इसमें वही है कि आपको यू हैव टू सेट थोड़ा सा टारगेट अपने लिए कि एकेडमिक्स में मुझे खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है. सबसे पहले तो एक चीज लाइक आई कैन टेल यू कि जब आप नॉलेज वाइज देखोगे ना, यू विल सी कि 9 पॉइंटर और 10 पॉइंटर में देयर इज नॉट मच डिफरेंस. Right. ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद जीपीए में क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स मोर अबाउट मतलब टॉपिक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है, विच इज नॉट वेरी यूजफुल. तो तुम्हें वो अपने एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि डू आई रियली वांट स्काई हाई जीपीए, और लाइक इवन इफ आई हैव ऑल द नॉलेज ना, तो भी जैसे आई हैव मेट 8 पॉइंटर्स जिनकी नॉलेज 10 पॉइंटर से ज्यादा है. बहुत सही तो point. that is something
something I'm looking forward to. या फिर there are 7 pointers जिन्होंने बहुत projects किए होते हैं, बहुत internships की होती हैं, उनका real world experience बहुत ज़्यादा होता है. So it's about academically what I expect from myself. ठीक है, अब there are actually people जिनको ये सब पता होता है, still all they want is like very high GPA, which is not bad because like there are certain very few companies or very few universities which actually look for sky high GPA, so they have that kind of बहुत specific requirements है मतलब अपनी अपनी. So let's say मुझे है कि you know I want to work in a startup and I want to मुझे बहुत ज़्यादा tech में घुसना है. Like I want to be a part of the revolution that is coming to India in tech, crypto and all. So then I don't need a high CPI. I actually need real world experience and all. तो मेरी अपने खुद से expectations थोड़ी different है. So depending on what expectations I have from myself in academics, उस हिसाब से मेरा load different होगा. और उस हिसाब से I can balance other activities. बाकी आप you have to set your priorities. मतलब if अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें जिम जाना है हर रोज, तो इवन कल तुम्हारे 3 एग्जाम है तो तुम्हें आज जिम जाना है, लाइक दैट हैज टू बी सेट राइट. वो तुम्हें यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज. मतलब तुम्हें वंस योर प्रायोरिटीज आर फिक्स, तो उसके बाद जो भी टाइम बच रहा है यू कैन वो तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से. Your priorities, I think your goals, short term, long term goals should be envisioned and aligned with, whatever you're doing. So I think everything will be managed. अगर आपका वो clear है, you have this priority in line, तो सब कुछ अपने आप manage हो जाता है then. In fact, 11th, 12th में भी ऐसा ही होता है. It's just that, at that time you have to prioritize the certain things a little above, other things. It's just 2 years. And then afterwards, college में अपने आप, I think things just start fall into place once you're there. And आपको खुद clarity आने लग जाती है कि अच्छा हाँ, now this is, something I really want to do and I want to balance and, do work ahead with. Right. So I think third part of it is already also over. Let's move to the fourth part, and that is very important. That is the importance of internships. How important are internships once you're into college life, and how can you grab these internships, and how to choose the right internship. I think because there are so many opportunities आजकल, तो internship भी है, वहाँ पर भी इतना कुछ float होता रहता है. Then there are your seniors who are giving you a lot of inputs. There are other out of the college internships that are happening. So Tarush, how would you like to guide our students here, how important it is to choose the right internship and how to do it? So internship में again like it's a lot about what you want to do and what you want to explore. So there is a line, मतलब एक point तक you have to explore and after that you have to have some preference. मतलब so I'll tell you my experiences. So first year में I didn't like during first year मैं सिर्फ college का stuff किया था. And by the end of first year, like I heard from my seniors कि machine learning is like a very hot thing. मतलब 4 years back वो ज़्यादा hot थी. अब now there are other hot things as well. But उस समय like machine learning was quite hot. तो I decided to explore it. और मैंने थोड़ा सा like online पढ़ा, YouTube वगैरह, थोड़ा courses वगैरह देखे, and I realized it's something that interests me. So I started looking for opportunities जहाँ पे I can use my freshly gained knowledge. So I did an internship in Vedantu और like machine learning वगैरह पे था, and I really enjoyed it. मतलब corporate मतलब because I actually got to apply जो अभी तक मैं artificial projects कर रहा था, simulations में चीजें कर रहा था, वो मैंने actually real world data पे किया, और and I realized कि कितना different है कि मतलब when you do it in a project, in an artificial project, तो you just have to apply that knowledge directly. But real world में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें spoon fed नहीं होता data, या तुम्हें spoon fed algorithms नहीं मिलते हैं. You have to think on the spot, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत problems आती हैं. Then you have to present it to people and convince them कि why every step of the project was the right step, कि तुमने कुछ और क्यों नहीं choose किया. तो ये माय क्लासरूम में भी बिल्ड कर रहे हैं, तो ये अगले सेक्शन में आपको बताएंगे अक्षत और क्रांति की बेसिकली व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज यू हैव. सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर दैट सेक्शन आल्सो बिकॉज़ वो काफी कुछ होने वाला है. द वे तारुष मेंशन्ड अबाउट वेदांतु, माय क्लासरूम वाज नॉट देयर एट दैट टाइम, सो अब वो सब फोकस माय क्लासरूम पे शिफ्ट होगा. एंड
We'll be sharing all those things just after this section. And just to mention, internships doesn't mean only about, we're talking about computer science or coding internships. So, internship for all the core, even for all the fields that are there, internships are very important. Like I did my HR MBA in HR. So internships actually form a base for your placements as well. There are many students who get absorbed during their internships only. They get pre-placement offers. You would have heard about that. So if you do well in an internship, you learn, you perform well, you're already, sorted. आपको आगे अपने प्लेसमेंट की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, and there's so much learning that takes place, and internship forms a good base for your your resume as well. And if you've done a good internship, you are automatically qualifying for certain good jobs. So I think one should be very judicious in internship में like company. So the most important thing about internship is the project and how well you understand your project and what you have done and उसका कितना real world impact था. Exactly. That's the most important thing about your internship. Industry interface एकदम अलग होता है. Second point I think we have already explained. वो जो Siva ma'am has explained it well. Research, internship versus business, tech, everything I think is covered. So, it depends on, what is your priority, where you see yourself going ahead. So I think you should choose your internship based on that only. So the third is, how easy is it to get an international internship? ये भी अच्छा opportunity है. So Tarush, did you apply for an international internship? मतलब सर आई डिड, मतलब मेरे टाइम पे तो कोविड आ गया था, बट उससे पहले तक तो काफी अपॉर्चुनिटीज थी. तो लाइक इसमें भी लाइक इसमें लिखा हुआ है ना रिसर्च एंड बिजनेस इंटर्नशिप. सो लाइक देयर आर कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स इन कंपनीज और देयर आर यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप्स, जैसे दीपक सर ने की थी आई थिंक. मैंने जर्मनी में आई डिड दैट इंटर्नशिप. यस. हाँ, तो लाइक आईआईटी बॉम्बे में ये ट्रेंड है कि पीपल प्रेफर सेकंड ईयर में this university internship and third year में corporate. Delhi में भी same. Delhi was also the same. Just ताकि दोनों experience हो जाए, और third year में if you get a pre-placement offer then you don't have to sit for your placements also. तो दोनों experience बहुत अलग होती है और दोनों experiences worth having हैं. हमारे टाइम पे कोविड की वजह से most people couldn't have the university internship experience, और यूरोप घूमने को भी मिल जाता है if main agenda is that only. Main agenda तो वही है. Yes, we all went. I think people sir went for that only. I went for exchange and internship to France for that only. कि चलो अच्छा है उसमें पढ़ाई की पढ़ाई, and then you get to explore. पढ़ाई तो वैसे क्या ही होती है, घूमना ही ज्यादा होता है. Yes, Europe. So that is also learning. You're learning about. Internship देखो बच्चों, अगर सीखना है तो वो इंडिया में ज्यादा अच्छी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. बाहर जाते हैं तो घूमने का एलिमेंट ज्यादा होता है. But that also adds a lot of things to your personality. That helps. So in overall development of a lot of things, and also it speaks, value in your resume and in your profile, in your personality overall. So that is also very important. The fifth section, यहाँ से I think the baton now shifts to our 2 stars. So I'll just give you a brief introduction about, Akshat and Kranti, who are leading the my classroom bandwagon here. So Kranti Tej is an IIT Madras and I am Ahmedabad pass out. He's a senior product manager at My Classroom and has worked with Ample, Solar, and Vodafone. He'll be, telling you about the various internship opportunities that are there at My Classroom. And next we have is Akshat Agarwal. He's also an IIT Delhi 2020 pass out. He's the associate product manager at My Classroom and has worked with AB in Bev as data scientist, before. So a lot of things here to share from both of you. So the ball is in your court. Over to you, Kranti and Akshat. Thank you so much, Sivya and Deepak. Thanks for the introduction. Just, I hope I'm audible, right? Yes, we can hear you. Perfect. So, as Sivya introduced me, so basically my name is Akshat and I am an alumnus of IIT Delhi 2020 batch. So Deepak sir ka junior basically. And so first of all, thank you for this session. I would say, मतलब I would say I'm a bit early. मतलब अगर मैं इस stage पे होता, मुझे इतना benefit मिलता है इससे. There are a lot of things which I feel कि काश मुझे उस time पता होता. So, it would have helped me. So all of you is listening to this. You're very fortunate that my classroom has organized such a session. So I'll just give you a brief, what we can touch upon. So basically, जैसा अभी तारुष ने and Deepak sir ने बताया throughout the session कि there are a lot of opportunities and as you basically get into the college, you get into different sort of streams. So बहुत सारा opportunities होता है, and because we as at My Classroom,
are not only a coaching institute, but we are a full-fledged tech company, and we are building towards advancing the technology and basically जो उसके पीछे का जो एक टेक रेवोल्यूशन होता है, that is what we are trying to build, ताकि जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है he has a very holistic view of preparation. So there are three main aspects जो आपको दिख रहे होंगे I think screen पे. So one is product-led growth. So I'll just touch upon, and maybe Kranti, wherever you feel any information is needed, please do add. तो बेसिकली प्रोडक्ट लेड ग्रोथ में क्या होता है, बोथ ऑफ अस प्रोडक्ट मैनेजर्स, तो ये हमारे लिए सबसे इजी टू टेल है कि जो भी आप प्रोडक्ट देखते हो, बीट टेक प्रोडक्ट जो जैसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, और एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट इज यूज्ड एट एनी ऑर्गेनाइजेशन. So that is built with some at the back of product managers who whose job is to basically understand what the user wants. अब जैसे हम लोग खुद भी IIT जर्नी से निकले हैं, राइट? सो हम लोग को पता है क्या प्रिपरेशन करना होता है, व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स दैट वन फेसेस. जैसे तारुष ने पूरी जर्नी में बताया IIT के, सो आई कुड वेरी वेल रिलेट कि ये सब हमारे साथ भी हुआ था. So our job here is basically how we can use tech or any other method as a matter of fact to solve that problem. So this is something that in future you can explore अगर आपको if it interests you to understand user psychology, user journey, but definitely this is something which is a very great space to be a part of. The second part is data science. So I mean आजकल तो पूरा दुनिया ही डेटा का है. Everything on the internet is basically data led. जो भी आप anything, every user that is accessing the internet, having access to any sort of basically tech system, I would say, is providing his data, and that data can be leveraged in ways that you cannot even imagine. Matlab, I can tell you some projects which are very interesting projects that are coming up at my classroom. Just we are aiming to build an adaptive learning model. Isme we are planning to use the data of a student based on his past performance, and then we will recommend him कि आपको क्या पढ़ना चाहिए. So for example, if I identify कि ये बच्चा Newton's law of motion में weak है, so I can tell him कि बच्चा आपको ये पढ़ना है. I can even provide him some material assisting in that sense. तो मतलब इसमें तो there are infinite possibilities. एक बार आपके पास data है, so you can help and you can generate so many opportunities and so much value you can add to a person's life. But the full stack development, तो ये जैसे मतलब पूरे throughout में touch हुआ है, coding होता है, that is the base of every technical product that you see. So full stack development, maybe there are two aspects. There is basically the software that you see, which is the front end. जैसे आपको दिख रहा होगा, everyone is logged into Zoom या YouTube. तो जो front interface दिख रहा है, that is all the front end side of it. User का कैसा experience है, that is all built by engineers and computer scientists. And then the back end की जिसपे सारा आपका जो basically जो code चल रहा है, all the database, every API and all those things. So again, मतलब we are advancing into a very tech, age, and at my classroom, our main goal is to use this technology to revolutionize कि बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है. आपको पुराने जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, it was just about picking up a module and उसमें से solve like Deepak sir said कि तुम्हारा जर्नी खत्म नहीं हुआ है. It has started with my classroom. So we hope to see some of you back very soon. So I think that is it from my side. Kranti, over to you if you want to add anything. Most of the points. So what we are basically doing at my classroom is we want to understand like what pain points the students are facing currently, and how can we use technology to address these problems so that your education experience is much more smoother. So all these four verticals that you see are related to that aspect itself, and they tie into each other. We wish you all the best, and we hope to see you soon as interns with my classroom, and uh, connecting with us like going forward as well. मतलब बच्चों बहुत चीजें हैं, एकेडमिक पार्ट भी है. किसी को टीचिंग का शौक है, ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स दे वांट टू मे बी गेट इनटू एकेडमिक पार्ट आल्सो. So even that is also going to be there. बहुत सारी opportunities you can unlock. So we'll start sharing those opportunities on your respective groups also. Future में भी देखते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जुड़े रहें, but please be in touch. Or I think now we can have a quick Q&A sessions. We already have certain questions, so we can handpick certain questions because we are already I think running a bit late. So we'll just wind it up in good 2 to 3 minutes so that we can take up the important questions which has come our way. Right.
So there's one question, and I think it's open for all to answer. So how to improve your English during the college time? So that is one question a student has asked. I think Deepak sir can help here because I've seen him, doing that brilliantly. He was using a lot of things like, But I think I'm a bit outdated in this. Yeah. Maybe the younger brigades would be able to tell better. उनके पास आजकल technology में इतना कुछ होता है. So anybody would like to take this up? How to like improve English during college? I'll share one experience here. I remember him doing that. So, he was passionate about cricket. So I think learning becomes easy when you actually attach it to a hobby or a passion that you have. So what he used to do was he always, while watching cricket matches, he always used to switch to English channels and used to listen to English commentators. So that, and he was so ardent in that, because he didn't even want to miss a single information, that it actually helped him improve his English a lot. So, and there are a lot of clubs that you can be a part of when you're in college, right? For English public speaking. There are international clubs as well. Toastmasters International is one of that club, and most of the, I think, bigger colleges, all IITs, IIMs, they have these clubs, and they actually help you move ahead in this journey of public speaking, English improvement, your stage presence, everything, even your personality development. And there'll be, I'm very sure, Harik College mein, there'll be an in-house language club. Most of the colleges they have. Yes, so you can join that. You can start, conversing with your friends. You can with your college mates. बच्चे कुछ चीजें तो बहुत standard है. If it's possible, online भी चाहे बेशक. Yes. Newspaper reading और article reading की आदत तो पक्का से डालो. वो अभी से इनफैक्ट फॉर अभी से डालना शुरू कर दो. अगर कोई everybody चीज इंटरेस्ट करती है ना, maybe cricket करती है, maybe technology करती है, maybe sports cars करती है, maybe something else, science करती है, start reading a lot more. जितना तुम पढ़ोगे, you'll start picking up a lot of stuff from there directly. So whatever you will read will stick with you and you will be able to relate to it better. So reading is a brilliant habit to have. और वो ही पढ़ो जो तुम्हारे इंटरेस्ट का है. छोटे-छोटे आर्टिकल बड़े भी नहीं. So that कि 10 मिनट 5 मिनट में you get that information and you process that information and you move to the next article. So always read, not the novels if you can't spare that much time. Short articles, something of your interest, something which gives you some good insights also, and at the same time, it should help you in improving your language skills also. So I can add a slightly different perspective to this. So whatever Deepak sir and Sivya ma'am have suggested, they work very well. Slightly more on the tech perspective, I think we have very good apps nowadays. I think Duolingo is one of the very good apps from which you can learn English very easily and it is a very user-friendly app. So I think some of you can try that out and you may Could you please spell out the name again? Duolingo, Duolingo. I can put it on the chat. Yeah, brilliant. So that's what I was looking for. The younger brigade giving a better, more, I would say, tech-oriented answer to it. Right. So I think that would help. Now I'm just moving on to the next question. So there's one person, I think also it's a very relevant question because the counselings are happening these days. So student has asked, how to choose a course while you're selecting your college. So, students, they get confused about, whether to take up computer science, mechanical, civil, and majority of the students, they end up, deciding their course just based on the packages that are attached to it. So any thoughts on that? Tarush, you would like to say anything about it, Kranti? Yeah, so उसमें वही चीज थी like जो मैंने पहले कहा था कि एक इंडिया में IITs काफी ग्रोइंग फेज में है, which is why कोडिंग के पैकेजेस करंटली इनिशियली ज्यादा हैं, but career wise all of them are like very different careers and all of them are very good careers. So in the long run, even 4 or 5 years down the line, you would be better off in a field जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है rather than कि तुमने फर्स्ट ईयर की सैलरी देखकर जो तुमने फील्ड लिया है वो. I think talking to your एक पॉइंट मैं पक्का से ऐड करना चाहूंगा because this is something which has been coming up to me for so many years now. और मैं बच्चों को जो कहता हूँ, अगर तो तुम एक एक्सट्रोवर्ट आदमी हो, मतलब जहां तुम अपने लिए लड़ सकते हो, मतलब अपनी जगह बनाना जानते हो, then choose college over branch, because then going to a big college, better college, you will be able to create space for yourself. Position of responsibilities ke through, academics ke through, you will easily match up with anybody in the top college also going forward. Maybe
3 years, 4 years after your job. But if you are a reserved person, somebody who wants to play safe, somebody who's not experimenting a lot, इसको है कि यार मैं तो ना easy life चाहता हूँ, एक simple सा मुझे well laid format मिल जाए, मैं ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं कर पाऊंगा, then choose branch over college, because then you are in a safer hands, because then you know that you have chosen something which will make sure that you'll end up with a good job. So it depends on your personality. If you're ready for a fight, you will know you can get a good, I would say, substantial standing for yourself. You'll be able to fight out for yourself. Go for the better college. College better होगा, branch compromise हो भी गया, फर्क नहीं है. जैसे तारुष ने कहा, skill होगा, talent होगा, you will outbeat other people very easily. But अगर you want to play safe, you're not that kind of a person who's up for a fight, then I would say branch over college. This is what is my experience, what I've seen over the years. I think that is very important. Also, you can talk to a lot of your seniors, who that how this journey of 4 years is, what are the courses you can explore, because before that you only get a very you don't get a bird's eye like view, and you don't get to understand what is actually inside that course. 4 साल में क्या पढ़ना है, क्या है, and does that Quora पे बहुत interest सारे you? questions you can post. Quora पे you can get a lot of information on this. Facebook पे there are a lot of groups on which you can post these things. Quora पे I've already seen that people post very good answers. So if you put certain queries on Quora, you will get good answers. Facebook groups again used to work well earlier. I don't know whether they work well now or not. But उस पे आप ये सब चीजें भी डाल सकते हो. So you have to explore. ये life का one of the most important decision है. So give some time to it and explore before deciding. Last question that we'll take is it is coming from a YouTube listener. So he's saying that, but though we've covered it, we'll just give a brief on that how to handle failures during college life where you don't have the support system of home. So any thoughts on that, Tarush? I think you already, though you talked about that, your support system, I think, is in the form of friends here then. If the family is not there, right? Any particular experience that you'd like to share? And mentor जिनसे comfortable हो, maybe coaching में, maybe कहीं पे भी, उनको भी reach out कर सकते हो. That will not be a problem. मतलब seniors को बताना तो शुरू कर देना day 1 से ही, क्योंकि they are going to tell you कि तुम जिस मुसीबत में हो उसमें पहले भी लोग फंस चुके हैं. That is a बहुत हेल्प करते हैं, और लोग पहले जो फंसे वो कैसे बाहर निकले हैं. Because you will तुम देखो कॉलेज में you will get into troubles and get into failures. तो seniors जो already उससे निकल चुके हैं, they are very important उस चीज के लिए. And most colleges have a default mentor system, like for first and second. Very programs, yes, they have. Very important point. They have a very strong mentor systems also now. Majority of colleges. हाँ, तो that is also, मतलब उस mentor से भी बहुत अच्छे से बना के रखना, because I'm still in touch with my first year mentor. मेरे फर्स्ट ईयर में थे, और उन्होंने लाइक बहुत हेल्प किया मेरे को कॉलेज के थ्रू, जब भी मैं whenever I've been in trouble. तो that is बाकी friends और seniors तो ये important चीजें हैं. Very important point. I think Tarush, you've mentioned all the points have been covered so brilliantly by you. I think because you recently passed out of college, so it comes so handy from you, and you've shared your experience so well. I think very important here to cling on to your mentors, to your support system, that is your friends. They're here at college and in hostel, especially when you're living away from your family, so it will all be taken care of. And again, I'll again reiterate the point that I was mentioning, that it is the stepping stone for the life ahead. Your college life is basically the stepping stone. It's these situations will again come to you while you move out of college, and even bigger situations will come. So you're getting prepared for that. So these 4 years of college are the most important for you to build on anything and everything. Your friends, your family, your support system, everything, your personality, your overall development, which way your life will go, they'll be deciding. So बच्चे बोल रहे होंगे वैसे, है ना, पहले बोलते थे 2 साल, these 9th, 11th and 12th are most important, just go for that. Now they've changed the years, and they're like these 4-5 years of your college are the most, but these are the fun years. ये fun years है, मतलब they are formative years. They're going to build you. Yes. And one thing that we assured My Classroom as an association is always there for you. This is not just a coaching institution, as very well explained by Akshat and Kranti. We have ample opportunities, and they keep on adding, because हम लोग भी बहुत कुछ explore कर रहे हैं. हम लोगों को खुद बहुत सीखने को मिल रहा है. All these young people who are coming in, they're bringing in so many brilliant ideas.
तो हर दिन कुछ नया मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, and that adds to the overall repertoire of the company. So I think by the time तुम लोग थोड़ी समझ आएगी, 2-3 साल हो जाएंगे कॉलेज में, I think we will have infinite opportunities for you people. And during that period also, be open. We'll keep on sharing those opportunities. We'll keep on floating those opportunities. And we just want our old students to be part of us. Like, मजा आएगा जिस दिन मतलब तुम लोग भी इसी तरह से हमारे लिए सेशंस ले रहे होगे. And we'll also try to have more such seminars and webinars. Yeah, it's just a beginning. It was just a beginning, involving more people and more perspectives. And please keep pouring in your suggestions that what you want to hear, and we'll try level best. Thank you, everyone. Thank you so much for listening to us, and thank you, Akshat, Kranti. Thank you, Tarush, for joining us today. We know you are now into a job, and its schedule is really hectic, but you're always a call away. So thank you so much for sharing your experience, and you've shared such brilliant, amazing perspective of the college life, of the IIT life, that I think none of us could have actually brought on. And I'm very sure a lot of students would be touched by that, and they will be able to extract valuable information, which would help them going forward. They would be able to maximize their experience now at college life much more. They'll be better placed than when we went into college life. And seriously, मतलब ये बहुत important है. मेरे को तो फर्स्ट ईयर के एंड पे पता चला था कि एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है. इतनी सारी चीजें पता ही नहीं थी. स्कॉलरशिप तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था. And people miss out on scholarships because they don't get to know. Nobody's exploring. Nobody knows that there are scholarships. So now all these people who joined us today. You are better. You are ahead of your peer once you are into college. So take value of that opportunity and just maximize. So thank you, everyone. Thank you so much for joining us. Thank you again, Tarush. Thank you, Kranti. Thank you, Akshat. Thank you, Deepak, for sharing all the insights. Lovely experience. Thanks a lot. All the best, guys. All the best. You're joining your alma maters, and we just wish you all the best for this amazing journey that lies ahead for you and is waiting for you. Thank you so much for joining us. Thank you. Bye-bye. Good night. Thank you so much. Bye-bye.